इस बीच आप एक जी बिजनेस का टुडे स्ट्रीट देखिए, गति लगभग 4.5% ऊपर 6 रुपए की तेजी के साथ डे हाई पर ट्रेड कर रहा है गति आपकी स्क्रीन पर। लेकिन ऐसे एक ऐसे ही और स्टॉक देखते हैं आज का सुपर शेयर, आइए देखते हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित बताइए। शुक्र है वीरेंद्र। आज जो शेयर चुना गया है वो फार्मा स्पेस से मिड कैप फार्मा से चुना गया है। विविमेड लैब को चुना है। कंपनी के नंबर्स आए थे रिसेंटली और नंबर्स काफी रोबस्ट देखने को मिले थे। 125% कंपनी का मुनाफा बढ़ा था सीक्वेंशियल आधार पर। वाई बेसिस पे भी नंबर्स में करीब 20 से 22% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। ऑपरेटिंग मार्जिन 2% और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 2% के आसपास बढ़ते दिखाई पड़े सीक्वेंशियल आधार पर। और क्योंकि डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी हो चुकी है, अब करीब 10% के आसपास कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया गया इसी क्वार्टर के अंदर। अहम चीज यही कंपनी के ऑपरेटिंग फ्रंट पर जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी साउंड थी। 20% के आसपास की ग्रोथ वहां पर भी देखने को मिली। अच्छे कैश फ्लोज हैं तो एक अच्छे डिविडेंड पे ऑफ्स भी कंपनी लगातार करती चली आई है। एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का मेंटेन्ड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यू वाइज देखें तो करीब 5 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर करीब 30 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। मिड कैप स्पेस में अगर देखें तो करीब 15 से 17 के मल्टीपल पे यूजुअली ज्यादा सेक्टर कामकाज करता है, लेकिन ये शेयर 14.5 रुपए की ईपीएस और महज 5 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। इसके अलावा जो बुक वैल्यू वाइज भी देखें तो करीब 120 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है। शेयर करीब 70-76 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, तो बुक वैल्यू से भी काफी नीचे है। रिसेंटली 99 के आसपास का शेयर ने हाई बनाया था, वहां से करेक्ट हुआ और 70s की रेंज में शेयर कामकाज कर रहा है। जिन रिपोर्ट्स को रिफर किया गया उनका भी मानना है कि यहां से शेयर में पोटेंशियल अपसाइड काफी ज्यादा होता, दोगुना तक भी होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि आनंद राठी की एक रिपोर्ट को रिफर किया गया। उनका मानना है रफली 150 रुपए तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छे पोटेंशियल अपसाइड और रादर इन तिमाही के नंबर्स के बाद एक री रेटिंग स्टॉक की होते हुए दिखाई पड़ी है, जिसके आधार पर इसमें खरीदारी की राय दी जा रही है। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा काउंटर है जिस पर आप नजर रख सकते हैं। विविमेड 7% ऊपर इस समय, और जैसे सुमित बता रहे थे आनंद राठी की एक रिपोर्ट है जिसको रेफर किया गया है, इस पर नजर रखिएगा। एक बार देख लेते हैं यस बैंक को। अभी अपने कहा एक ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद अच्छी रिकवरी है स्टॉक में। हालांकि 3% नीचे तो अभी भी है, लेकिन जो इंट्राडे लो इसने हिट किया था वहां से अच्छी रिकवरी है। अब कुछ और चार्ट्स को देख लेते हैं जहां पर इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। एक बार देखिए रिलायंस कैपिटल को, इसने नया 52 वीक हाई हिट किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। काउंटर 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। पटेल इंजीनियरिंग ने अच्छा रिबाउंड दिया है, काउंटर फिर से एक बार 5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने अच्छा मूव दिया है, नया हाई हिट किया है 2.5% ऊपर, 631 का लेवल यहाँ पर इस समय है। और साथ ही बामर एंड लॉरी इस काउंटर पर 2.5% का मूव है। एक्साइड तो है ही नए हाई पर, और साथ ही HUL, मन्नापुरम फाइनेंस, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव। हमारे साथ अब जी चोखालिंगम भी जुड़े हैं। चोखा, मॉर्निंग टू यू। You know, we have Gautam with us from Kolkata, and his view is कि थोड़ा cautious रहने की ज़रूरत है मार्केट में इस समय, because maybe there is not much steam left in the near term. आपका व्यू क्या है? A small deviation. There is no need to worry about the market, but there is a need to worry about individual stocks. There are two types of stocks where one set of stocks are enjoying a superb valuation, which is not sustainable. There are other stocks where still the valuation comfort is there. Now, I continue to maintain the view that the market will create a lifetime high before December 31st of this year. And this time, from 29,000 index to beyond 30,000, what would lead the rally is, something like stocks like ITC, Lupin, Infosys, which are in doldrum. They would give the support. And there is a lot of comfort in terms of valuation multiple for these companies. And on the other hand, some of the mid-cap stocks also where the valuation comfort is there, they would continue to rise. However, I would advise a caution that there are 2/3 of mid-cap stocks which are overvalued. So therefore, one should have a stock-specific approach and ride on this bull run. ओके गौतम, कुछ देर पहले हमने निफ्टी की बात करी, निफ्टी बैंक की बात करी, एक और स्पेस की बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमने बात करी कि हमें पहली चीज़ देखनी चाहिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और मुझे को अपना रिस्क तय करने के लिए एक्चुअली ये देखना पड़ता है कि मेरे स्टॉक का, मेरे इंडेक्स का बेस कहाँ पर है। इसी चीज़ को देखते हुए मैं एक आपसे राय चाहूँगा फार्मा स्पेस पे। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ सन फार्मा, 1200 रुपये का हाई था मार्च 2015 का इस स्टॉक का। इसने पूरा का पूरा CY15 का सेकेंड हाफ और पूरा का पूरा CY15 का सेकेंड हाफ एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज में निकाल दिया। सेम इज द केस विद अदर फार्मा स्टॉक्स एज वेल। आपको लगता है कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, एज ए मिड टर्म ट्रेडर इन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए? एटलीस्ट यू हैव योर बेस ऑन द चार्ट्स।
Well, the Bank Nifty, which I think is very important for your viewers, you know, the Bank Nifty moved up 4,000 more points since the day of Brexit. It was trading at levels of 17,000, and from there we are at 20,500. And I think if you really look at the last 1.5 years, reaching a level of 20,500 on the Bank Nifty is a completion of one major big cycle. And Bank Nifty has been the leader of this market in the last 6 months, no doubt about that. And if that index sees some correction from around 20,500, which is our view, because I think 20.5 is a big resistance for that index, I think then the Nifty will find it difficult to sustain at higher levels. So that's one point about the Bank Nifty. On the pharmaceutical space, I think you know, it's almost become negative beta. So when the markets are down, pharma does well. Markets are up, pharma does not do well. And I think this has been in play 2015 and 2016 so far, because it has been one of the underperformers. Now with levels close to 9,000 and with market participants a bit edgy buying into some of the other high beta spaces in the market, it makes absolute sense for some of the larger market participants to look at pharma, and I think that's the reason it made the comeback. And the point you made is very right. It spent a lot of time in the base building process. I think that for a lot of stocks, that process got completed yesterday. Lovely breakouts on some of the major pharmaceutical stocks. So even if the market's correct, if you're looking for opportunities on the long side, whether trading or investment, I think pharma is definitely a space to look at. There is no doubt that valuations have only got better with this correction of the last few months. And you know, these are good quality companies that you are getting at much better prices now in comparison to the last 6 to 8 months. So in that sense, yes, I think at levels close to 9,000, I keep saying that is a good time to look at pharmaceutical as a contrarian bet to be safe and to also hide in case there is a correction that takes place in the next 2 months. एक और चीज़ गौतम, आई थिंक इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, अब मैं शायद आप स्टॉक स्पेसिफिक ना बोलें, लेकिन फिर भी अगर आप ONGC के चार्ट्स को देख रहे हो, आई मीन सिर्फ मैं अपस्ट्रीम कंपनियों की बात करूँगा यहाँ पर, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टॉप आउट होने के संकेत दे रही हैं? और क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जब क्रूड में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, सस्टेन प्राइस सपोर्ट मिल रहा है क्रूड को, क्या ONGC को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए गौतम? Well, as I said, I think compliance-wise, I cannot speak about specific stocks, but our view has been that oil and gas could probably be the dark horse for this bull market, or I should say the next leg of the bull market. But the problem is in the oil and gas space, apart from OMCs, none of the other stocks have really done anything spectacular. I mean, a stock like Reliance does well, but the kind of fall that it has seen in the last 4 to 5 days, again, demotivates a lot of traders and investors. Even a stock like ONGC, it keeps doing well from time to time, but that sustainability is not there. I mean, look at the sustainability that you are seeing in cement stocks or seeing in auto stocks, the Bajajs of the world, the Hero Motors of the world. That kind of a clean move is not happening in oil and gas, and I think that's really my problem. And that is probably the reason I would recommend oil and gas as a trading play for now. So yes, some of these stocks which are still languishing at lower levels, you could buy them for a 5 to 10%, but don't look for superior returns trying to buy and hold for 6-12 months. I think there are much better spaces in the market to look at in that context. बिल्कुल. इस बीच एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स को देख लेते हैं. आज ट्राई ने एक मीटिंग भी बुलाई है ऑफ ऑल टेलीकॉम प्लेयर्स इंक्लूडिंग रिलायंस, क्योंकि जो टसल इस समय चल रहा है रिलायंस जी और बाकी सेलुलर ऑपरेटर्स के बीच में. चोखा, व्हाट्स योर व्यू टेलीकॉम स्टॉक्स पर, स्पेशली जो करेक्शन हमने भारती एयरटेल या फिर आइडिया पर देखा था पोस्ट रिलायंस जियो लॉन्च, आपकी सलाह क्या है इस समय इन स्टॉक्स पर? Yeah, last 1.5 years we have avoided mobile telecom stock except Arcom. That again as a short-term tactical strategy, because Arcom will definitely divest the tower business, which is in a greater demand in the country today. And therefore, short-term investors can consider Arcom. Otherwise, I would stay away from most of the mobile companies, because it's an oligopolistic market, and Reliance Jio definitely would upset the margin of the industry. And very interestingly, the existing players like Vodafone, Idea, Bharti Airtel, they are already making about 15,000 crore of operating profit per annum. So whereas Reliance Jio is yet to build a market share. So the competition is going to be very tough. The existing players are not going to keep quiet. They also will take it up a battle in a very big way. So therefore, the investor should stay away from these stocks, and they can look at a stock like a Bharti Infratel, which is a cash-rich company and strong balance sheet. And the tower business, as I said earlier,
because of this intensification of competition in 3G, 4G, the demand for towers would keep rising. So therefore, Infratel would be a major beneficiary. So that is why we have advised all of our clients, stay away from mobile company, but keep buying Infratel. गौतम, सीमेंट्स पे आपकी राय क्या है? एग्जैक्टली अगर आप देखें, हमारे व्यूअर्स ने, आपके क्लाइंट्स ने, बहुत लोगों ने खूब पैसा बनाया होगा सीमेंट स्पेस में। मैं थोड़ा सा लीड लेते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट से, अब आप देखिए ना, Q3 के जो नंबर्स थे गौतम, उसमें ये स्टॉक लगभग 2800 रुपये का था। आज ये स्टॉक 4200 का हाई लगा के आ चुका है। और एक चीज़ को देखने के बाद, आई वॉज गोइंग थ्रू द क्वार्टरली चार्ट्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, एक बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद शायद ये कुछ समय आपके मनी को प्रिजर्व करे, सेफ गार्ड करके रखे, लेकिन वहाँ से और कुछ जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद काफ़ी समय तक ये स्टॉक्स रेंज बाउंड रहते हैं। आपका क्या मानना है कि अब सीमेंट को एक बार के लिए अलविदा कहना चाहिए, अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? Not at all. I think, whenever this bull market ends, whether next year or 3 years down the line, and whenever a script about this bull market will be written, I think cement will be on top of that list. Just like you remember the 2003-2000 bull market for some specific sectors and stocks, I think this bull market is going to be remembered for cement. And I think there is huge upside even from these levels. A lot of clients tell us that it's trading at such high valuations now. It's trading near 52-week high. Should you be buying into them? The answer is yes, because I think charts are telling you with the fundamentals are not yet telling you, and I think going forward you are going to get more and more good news fundamentally in this particular space. And if you look at the mid-cap cement space, the kind of breakouts that some of these smaller stocks have seen after years of consolidation, I think it's phenomenal, and I think this is really going to continue. So I wouldn't be surprised if over the next 1 year many of the smaller stocks double in value at least, Gautam, and the larger stocks could at least I'll get back to you.